Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about Cambridge O Levels Chemistry Paper 2 which आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट which आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 to 9 मई जून. Question number 6. Sulfur dioxide and oxides of nitrogen are pollutant found in air. State one environmental problem caused by the presence of sulfur dioxide in air. तो अच्छा एक बात आपको ध्यान में रखनी है. Sulfur dioxide, sulfur trioxide, they are the oxides of sulfur, and nitrogen dioxide, when they react with rainwater, they react to form sulfuric acid or sulfurous acid. And when nitrogen dioxide react with rainwater, that form nitric acid. And these acids are very strong acids. बच्चे इनकी pH 5 से less होती है. And if water having pH less than 5, then this type of rain water is called acid rain. तो अच्छा यहाँ पे आप नाम देते हो, the answer is acid rain. Because pH is less than 5, it means the acid is very strong. Part B, coal fire power stations produce sulfur dioxide as pollutant. Sulfur dioxide produced is prevented from entering the air by process called flue gas desulfurization. FGD. Name the compound used in FGD that react with the sulfur dioxide. तो जो सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है सो दैट एसिड रेन कैन बी कंट्रोल्ड. तो जिसमें आप ऐड करते हो कैल्शियम कार्बोनेट जो सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके इट फॉर्म सॉलिड साल्ट एंड अब्सॉर्ब सल्फर डाइऑक्साइड, सो एसिड रेन कैन बी कंट्रोल्ड. C part, coal fire power station also produce oxides of nitrogen such as NO. NO is produced when nitrogen react with oxygen. Construct the equation for this reaction. तो बच्चे आपको यहाँ पर रिएक्शन करवाना है. नाइट्रोजन का फार्मूला N2, फार्मूला फॉर ऑक्सीजन इज O2. They combine to give NO given in the question. Now we have to balance the equations. तो बच्चे आपके लेफ्ट साइड पे 2 नाइट्रोजन हैं. We should write over there 2. तो आपका O already balanced. Next part, part 2. Draw a dot and cross diagram to show the bonding in a molecule of nitrogen. Only include outer shell electrons. तो बच्चे एक बार ध्यान में रखोगे आप. The formula for nitrogen is N2. तो बच्चे इसके आपको 2 N के एटम्स हैं और N contains 7 atomic number. तो first one you write the configuration in order to draw covalent diagram. तो बच्चे आपको पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है, फिर आपको फाइंड करने हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन टू कंप्लीट द वैलेंस शेल. तो बच्चे एन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द वैलेंस शेल. सेकंड आल्सो नीड 3. ये बच्चे मैंने निकाले हैं इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर शेयरिंग. अब इन दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं टू कंप्लीट द वैलेंस शेल. तो बच्चे देखें एन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 में से इसको 3 शेयर करने हैं. 5 में से इसको 3 शेयर कर, तो मैंने बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर लिए फॉर शेयरिंग एंड टोटल देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन. एंड सेकंड नाइट्रोजन एटम आल्सो हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, जिसको भी 3 शेयर करने हैं. तो ये आपका जो नाइट्रोजन एटम है ये के पास 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 then 3 then 4 then 5. So both share 3 electron and they form triple covalent bond to complete their octet. Next question is explain why the rate of reaction between nitrogen and oxygen increase as temperature increase. तो बच्चे टेम्परेचर के इंक्रीज होने से व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल स्पीड से मूव करेंगे, उनकी मोशन फास्ट होगी और मोशन फास्ट होने से नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलियंस बढ़ेंगी सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. सो वी से पार्टिकल्स मूव विथ फास्टर स्पीड. पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड वी आल्सो राइट number of effective collision increase. Number of effective collision
increases. D part, nitrogen dioxide react with water to form a mixture of dilute nitric acid and dilute nitrous acid. Reaction is given to you. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने बच्चे बेस ऐड की है टू फॉर्म टू डिफरेंट साल्ट्स एंड वाटर. कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. देखिए बच्चे आपको पहले रिएक्शन में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्ट किया वाटर से तो एसिड बने. तो इन सेकंड पार्ट देयर आस्क के आप इसमें बेस ऐड करो. आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बेस ऐड करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड यू नो दैट व्हेन एवर नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक होते हैं when they react with base your answer should be salt and water. तो बच्चे एक तो वाटर बनेगा and they are asked कि there are two different types of salts. तो बच्चे देखो आपको हिंट मिल रही है, आपके गिवन रिएक्शन में दो एसिड बन रहे हैं, आपको इन्हीं के साल्ट बनाने हैं. तो आप पढ़ के आए थे जब किसी भी एसिड में से आप रिमूव करते हो या रिप्लेस करते हो हाइड्रोजन विद मेटल साल्ट्स आर फॉर्म्ड. तो बच्चे आप पहले एसिड नाइट्रिक एसिड में से आप H को निकाल कर सोडियम लगा दें, यू गॉट NaNO3. ये बच्चे आपका फर्स्ट साल्ट बन गया. और सेकंड नाइट्रस एसिड का H रिमूव करके सोडियम लगा दें, यू गॉट NaNO2. नाइट्रस एसिड से NaNO2. तो ये बच्चे आपके दो साल्ट बने विद वाटर. नाउ बैलेंस द एटम्स. लेफ्ट साइड है बच्चे आपके पास 1 नाइट्रोजन है, राइट साइड पे वी हैव 1 and 2 नाइट्रोजन. बच्चे आप यहाँ 2 प्लेस कर दोगे. राइट साइड पे वी हैव 2 सोडियम, 1 is there, should write 2 over there as well. नाउ काउंट ऑक्सीजन. लेफ्ट साइड बच्चे आपके पास 2 into 2 4 plus 2 6 ऑक्सीजन है. राइट साइड पे बच्चे 3 4 5 6. इट इज बैलेंस. H is already balanced. तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड. सेकेंड पार्ट, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रस एसिड इज वीक एसिड. Describe the difference between weak acid and strong acid. तो बच्चे we define weak acid as the acids that incomplete or partially ionized, and the strong acids are the acids that completely ionize. ये बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. सल्फेमिक एसिड NH2SO3H is a white crystalline solid. It reacts with aqueous sodium nitrite to make nitrogen gas as shown. which आपको reaction given है. An excess of sulfamic acid react with the 20 cm cube sample of 0.15 mole per dm cube. So NaNO2 sodium nitrite. Calculate the maximum volume in dm cube of nitrogen form. तो बच्चे मैं डाटा अरेंज करता हूँ, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है नाइट्रोजन का. दैट्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. एंड द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, आपको बच्चे वॉल्यूम गिवन है NaNO2 दैट्स इक्वल टू 20 cm क्यूब. एंड बच्चे आपको कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी गिवन है मोल्स पर डीएम क्यूब में फॉर NaNO2 दैट्स इक्वल टू 0.150 मोल्स पर डीएम क्यूब. ये डाटा अरेंज किया. नाउ बच्चे वी नो दैट डाटा इज फॉर डिफरेंट सब्सटेंस. एक आपको बच्चे NaNO2 की इंफॉर्मेशन गिवन है और एक आपको फाइंड करनी है N2 की. तो बच्चे आप इस पे हिंट यूज करते हो. इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ डाटा, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर गिवन टू यू. तो बच्चे आपके दो स्टेप होते हैं. आप पहले स्टेप में गिवन सब्सटेंस के मोल फाइंड करते हो और फिर बच्चे आप सेकेंड स्टेप में अननोन सब्सटेंस के जो आपने फाइंड करना है उसके मोल्स फाइंड करते हो. तो अच्छा आप गिवन सब्सटेंस के मोल कैसे फाइंड करते हो? फ्रॉम डायरेक्ट फार्मूला. तो ये अप्लाई करते हैं, आप फाइंड करेंगे मोल्स फॉर NaNO2 फ्रॉम डायरेक्ट फार्मूला. दैट इज कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम. तो बच्चा वैल्यू पुट कर दो. आपको कंसंट्रेशन गिवन है 0.150. आपको मोल्स फाइंड करने हैं एंड वॉल्यूम इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 1000 बिकॉज वी नीड वॉल्यूम इन डीएम क्यूब. तो इसका आपके मोल्स का फाइनल आंसर आएगा 0.003 मोल्स. ये आपके बच्चे मोल्स निकल आए फॉर NaNO2. नाउ जो सेकंड स्टेप, अननोन के मोल्स फाइंड करने हैं फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बाय रेशियो मेथड. तो बच्चे आप रेशियो मेथड बना लो. फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको बच्चे फाइंड करने हैं नाइट्रोजन के मोल्स
और आपके पास मोल्स गिवन है NaNO2 के। In the balance equation NaNO2 having 1 mole, N2 has 1 mole as well, so mole ratio 1:1, and the moles of NaNO2 are 0.003 multiply on both sides. Now your answers for moles of N2 are 0.003. ये बच्चे आपके moles निकल आए. For nitrogen we have to find the volume. Now use the formula, that is moles for nitrogen, that's equal to given volume by molar volume, and at room temperature and pressure the value of molar volume is 24 dm cube. Now multiply here. बच्चा आपने moles find किए हैं 0.003. we have to find the volume and value of molar volume is 24. Now you got the final answer. इसको multiply करोगे and volume comes out to be 0.072 dm cube. So your answer is 0.072 dm cube for volume of nitrogen. Part B. The rate of this reaction can be determined by measuring the volume of nitrogen formed every second. Draw a label diagram for the assembled apparatus that can be used to make, collect and measure the volume of nitrogen formed in this reaction. बच्चे N2 is gas. बच्चे आप गैस measure करने के लिए यूज करते हो gas syringe. To measure the volume of gas we use gas syringe of this diagram. ये बच्चे आपके पास एक साइड से ओपन है और this is the gas syringe and this is the piston of the gas syringe. आप इसके फ्रंट साइड से इस होल से N2 गैस को कलेक्ट करोगे. And the operators used here, we use conical flask of this shape. अच्छा आपने इसके अंदर पहले फिल कर देना है सल्फेमिक एसिड. यू गॉट सल्फेमिक एसिड हेयर. ये जो आपने लेबल डायग्राम बनानी, यू गॉट NH2SO3H गिवन इन द रिएक्शन. साथ बच्चा आप ऐड करते हो NaNO2 जो आपका साल्ट है. बाय सम केमिकल रिएक्शन आपकी N2 गैस बनती है दैट कैन बी एस्केप्ड हियर एंड यू अटैच कॉर्क एंड डिलीवरी ट्यूब. यहाँ से बच्चे आपने गैस कलेक्ट करनी है इन डिलीवरी ट्यूब. दिस डिलीवरी ट्यूब अटैच विद द गैस सिरिंज. तो ये बच्चे आपको यहाँ अटैच कर देनी है. और हेयर बच्चे आपको अटैच करना है कॉर्क. आपको कॉर्क अटैच करना पड़ेगा सो दैट H2 गैस कैन नॉट बी एस्केप्ड. तो यहाँ बच्चे आप एक कॉर्क अटैच करोगे टू क्लोज द upper mouth of this container. The cork should be there, that should be closed properly. और फिर आपको वैक्सिंग करनी पड़ती है ताकि आपकी गैस यहाँ से रिमूव ना हो. तो ये बच्चे आप कॉर्क लगा दोगे and waxing is here as well so that gas can not be escaped. And now we have to label the apparatus for this diagram. This is your gas syringe, this is the delivery tube, this is your cork, and these are the chemicals added in the conical flask. तो ये बच्चा आपके डायग्राम. तो बच्चा आप N2 गैस को कलेक्ट करोगे here in the gas syringe. Part C of this question is the concentration of NaNO2 is increased, the temperature of the reaction remain constant, state and explain how rate of reaction increase. आपने concentration increase की तो concentration increase करने से rate of reaction increase. So we say rate of reaction increases. reaction बच्चा आपका speed से होगा. It is because concentration increase करने से मॉलिक्यूल्स के नंबर ज़्यादा हो गए तो क्राउडिंग बढ़ जाएगी. क्राउडिंग बढ़ने से कुलियंस बढ़ेंगी. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने से वी नो दैट नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलियन इंक्रीजेस. सो वी से नंबर ऑफ effective collision increases, so rate of reaction will increase. D part, sulfamic acid forms salt called sulfamate that contain anion. It is given to you. Magnesium carbonate is added in the sample of NaNH2SO3H means sulfamic acid. Magnesium sulfamate, water and gas are formed. The gas turn lime water milky. Construct the equation for this reaction. तो look at that. बच्चा आपको दो कंपाउंड गिवन है. एक आपको गिवन है एसिड सल्फेमिक एसिड NH2SO3H and second compound is magnesium carbonate
And we know that in any reaction of carbonates, when carbonate react with acid, any acid react with carbonates, we know that your answers are salt, water and carbon dioxide. So they are asked a gas form turns lime water milky. It means it should be carbon dioxide that produce carbon dioxide, that produce water vapor as well given in the statement. And the salt form, that is very important. Look at that, the anion here is NH2SO3 with -1 charge, and the cation is magnesium. And we know that whenever you make formula of any compound magnesium having valency 2, तो बच्चे आप मैग्नीशियम का नंबर मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट की राइट साइड के बॉटम पे, एंड 1 को मल्टीप्लाई करोगे right side of magnesium at the bottom. So your formula comes out to be NH2SO3 whole twice with magnesium. तो ये बच्चे आपका साल्ट बनेगा. For this reaction इसको आप बैलेंस कर लें. There are 2 nitrogen on the right side. तो बच्चे आप यहाँ 2 प्लेस करोगे and everything is balanced. The next question. Question number 8. Lead is the metal with proton number 82. Use periodic table to state occupied electron shells in the atom of lead. तो बच्चे आपका lead ग्रुप 4 में प्रेजेंट है in periodic table. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, tin and lead. And बच्चे lead is present in 6th period of periodic table. It means it contain 6th occupied electronic shell. तो ये बच्चे आपका आ जाएगा 6. Use the periodic table to state the number of electrons in the outer shell of an atom of lead. तो बच्चे इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप फाइंड करते हो फ्रॉम द ग्रुप नंबर. तो ये बच्चे आपके ग्रुप नंबर 4 के अंदर है इन periodic table. It means 4 electrons in the valence shell of lead. Part B, describe with the aid of diagram, label diagram, the metallic bonding in lead. तो अच्छा metallic bond पढ़ के आए थे. In metallic bond we know that metal atoms or ions are arranged in close packing, and the free electrons are present in the empty spaces between the metal atoms. तो बच्चे आपके free electron present है in the empty spaces of metallic lattice. When you got label of this diagram, that is जो बच्चे आपके ब्लू कलर के एटम्स हैं दे रिप्रेजेंट मेटल एटम्स और पॉजिटिव आयंस, because after losing electron they become positive ions. And the electrons, these are the free moving electron, also named as delocalized electrons or free electrons. So we have to describe this diagram as well. So the points for descriptions are: in metals atoms are closely packed. So metal atoms or positive ions are closely packed. Then electrons move freely. Electrons are delocalized. Electrons are delocalized. And these delocalized electrons form very strong bond with the metal cations. So strong attraction between positive ions and free electrons. Part C, give 2 physical properties of lead that are characteristics of all metals. तो बच्चे मेटल की बेसिक प्रॉपर्टीज, they all are solids, they have high melting and boiling points because of strong attraction. तो बच्चे high melting point and boiling point, they are good conductors of heat and electricity. Part D, lead ethanoate is a white crystalline soluble salt. Name the suitable combination of the acid and insoluble base which is used to prepare lead 2 ethanoate. तो बच्चे lead 2 ethanoate आपने बनाना है तो पहली बात we need acid from ethanoate, and from ethanoate the acid named ethanoic acid. तो we need the acid ethanoic acid जिसका आपको नाम से आइडिया हो रहा है, because acid and base combine to give salt. And now we use base that should contain lead. तो बच्चे lead having valency 2 and base mean hydroxide, so we need PbOH twice, which is base
that react with ethanoic acid to form lead 2 ethanoate. Part E, aqueous lead 2 ethanoate react with aqueous sodium iodide. A yellow PPT precipitates of lead 2 iodide PbI2 is formed. Construct the ionic equation with the state symbols of this reaction. तो अच्छा आपके पास lead 2 ions हैं, तो अच्छा आपको इस reaction में lead 2 iodide make करना है. PbI2 formula is given to you. And aqueous lead 2 ethanoate means you got lead ions in aqueous medium, lead 2 plus in aqueous state that combine with iodide ion in aqueous medium. Because there are 2 iodine in the right side, तो बच्चे आपको यहाँ 2 से multiply करना पड़ेगा. तो this is your ionic equation for the formation of insoluble PbI2 which is solid. Explain why solid lead 2 iodide cannot be electrolyzed. Because it is non-electrolyte means it do not split into its ions. Or we say there are no free moving ions. There are no free moving ions. This is the answer for part F. Now next question is, the structure of ethyl propanoate is shown to you. Circle the atom in the structure that show that ethyl propanoate is an ester. तो बच्चे एस्टर का फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ा, दैट्स इक्वल टू COO with C. And in this compound we have ester as well as alkene. तो बच्चे alkene का फार्मूला हमारे पास that contain double bond as a functional group. तो यार आज के आपने एस्टर का स्ट्रक्चर को हाईलाइट करना है. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, इसके बच्चा डायग्राम पे आप हाईलाइट कर दोगे लाइक दिस. दिस पार्ट रिप्रेजेंट एस्टर. Part B, aqueous bromine is shaken with the sample of ethyl propanoate. Explain in terms of the structure of ethyl propanoate why the aqueous bromine turns colorless. Because बच्चे aqueous bromine हमारे पास टेस्ट है, it is called test of unsaturation, test of double bond और test of unsaturation. तो bromine aqueous which is reddish brown react with the double bond and give colorless solution. Aqueous bromine react with double bond. Bromine aqueous react with carbon-carbon double bond because it is a test of unsaturation between carbon-carbon double bond. Ethyl propanoate is prepared by the reversible reaction between carboxylic acid and alcohol. आपको बच्चे reaction given है. A mixture of carbolic acid and alcohol is allowed to reach equilibrium. Name the alcohol used in this reaction. तो बच्चे आपको अल्कोहल का नाम बताना है. तो फर्स्ट हम काउंट द कार्बन एटम्स. देयर आर 2 कार्बन, तो नेम्ड एज इथेन. बच्चा आप कार्बन 2 से इथेन का वर्ड लिखते हो क्योंकि अल्कोहल है, तो E रिप्लेस्ड बाय OL. तो अच्छा आप यहाँ लगा दोगे OL, तो नेम्ड एज एथानोल. सेकेंड पार्ट, द रिएक्शन यूज्ड एन एसिड कैटलिस्ट. स्टेट the effect of this catalyst on the position of equilibrium. So we know that catalyst increase the speed of reaction but do not disturb the equilibrium position. So the answer is no effect on position of equilibrium. Speed of reaction increase but do not the position. Third part, the concentration of alcohol is increased. Describe and explain what happened to the position of equilibrium. तो अच्छा जैसे आप रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ाओगे नंबर ऑफ कूलियंस बढ़ेंगी, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो रिएक्शन विल मूव्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो वी से इट मूव्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वी से मूव्स टू राइट साइड मींस टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड. इट इज बिकॉज वी हैव टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, सो इट इज बिकॉज टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, कंसंट्रेशन ऑफ एथानोल. तो जब आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है तो जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करोगे दैट विल डिक्रीजेस. द नेक्स्ट पार्ट इज इन पार्ट डी द एक्सपेरिमेंट 10.8 grams of carboxylic acid is react with excess of alcohol. The experimental yield of ethyl propanoate is 9.45 grams. The relative formula mass of carbolic acid is 72. Show that maximum possible yield of ethyl propanoate is 15 gram. तो अच्छा पहले डाटा अरेंज कर लो. आपको कार्बोलिक एसिड का मास गिवन है, तो इसे मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट्स इक्वल टू
10.8 grams. Now you find first one, the mole of carbolic acid. So we know that the formula is mole equal to mass by relative molar mass for carbolic acid. ये बच्चे आपको रिएक्शन में गिवन है, इंफॉर्मेशन डाटा में 72, तो आप पुट करेंगे 10.8 by 72, तो ये बच्चे आपके मोल्स निकल आएंगे फॉर carboxylic acid and that comes out to be 0.15 moles. ये बच्चे आपके मोल निकल आए फॉर carboxylic acid. And we know that for ethyl propanoate, when we react carboxylic acid with alcohol, your answer is ester along with water, and the mole ratio for carbolic acid and ester is 1:1. तो आप solve करोगे from balance chemical equation because you find the moles of esters. तो बच्चे आपकी carboxylic acid ratio esters, that is ethyl propanoate, that is 1:1. तो अच्छा मोल मल्टीप्लाई करोगे कार्बोलिक एसिड के 0.15 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बच्चा आपके निकल आए मोल्स फॉर एस्टर्स. ये बच्चा आपके एस्टर्स के मोल आ गए. नाउ यू फाइंड द मैस. तो वी हैव टू प्रूव मैस इज 15 ग्राम. नाउ वी अप्लाई द फार्मूला मोल ऑफ एस्टर इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस. अच्छा आपने मोल्स फाइंड किए 0.15. मैस आपको फाइंड करनी है मोलर मैस ऑफ इथाइल प्रोपानोएट. ये बच्चा फाइंड करोगे इथाइल प्रोपानोएट COC2H5. ये बच्चा आप सॉल्व करेंगे. कार्बन का मैस 12 इंटू 2 प्लस H का मैस 1 इंटू 5, O का मैस बच्चे 16, कार्बन इज 12, O इज 16, कार्बन 12 इंटू 2 and plus 1 into 5, इन्हें आप ऐड करें, your answer is 100 grams. तो बच्चा मल्टीप्लाई करोगे मोलर मैस, your answer comes out to be 15 grams. तो ये बच्चे आपका आंसर प्रूव, that is 15 grams of ethyl propanoate. Last part, calculate percentage yield of ethyl propanoate in this experiment. तो जो आपने mass find की, that is your theoretical yield, and actual yield is given in the numerical. You apply the formula, that is percentage yield equal to actual yield divided by theoretical yield multiply with 100. तो अच्छा आपके actual yield numerical में given, that is 9.45 grams divided by बच्चा आपने theoretical find की 15 grams multiply with 100. तो your answer comes out to be 63%.